In the previous lecture, we introduced the term erosion and also classified erosion into three categories depending upon the eroding agency: water, air, and glacier. So this one is the first one again. After that, to give you some explanation how water erodes the soil, carries it. Water erosion is most common geological phenomena causing leveling of mountains and development of plains, plateaus, valleys, river, flats and deltas. Water erosion is prevalent in the northern hilly areas of Pakistan, Potwar Plateau, eastern parts of Punjab, and the Himalayan foothills and Khyber Pakhtunkhwa. This map is purely for water erosion, rate of erosion. You can see the highest erosion is where water erosion is there, which has red area, high mountain area. And least is in the area which is green, means they have forest area. The annual rainfall varies in the areas of the water erosion suitable areas. The annual rainfall varies from 250 to 1000 millimeter. Uneven terrain promotes water erosion. Uneven terrain. About 50% of the rainwater is lost as a runoff. Runoff means the water that flows over the soil, it does not enter. So that's the part of the water which causes damages, runoff water. It runs over the soil surface. The detachment of material occurs by rolling, dragging, splashing, freezing, thawing, and flowing of water and raindrops. So this is the detachment. रोलिंग की वजह से, ड्रैगिंग की वजह से, स्प्लैशिंग की वजह से, फ्रीजिंग की वजह से, thawing की वजह से, melting, or flowing of water and raindrops, they can cause detachment. This is a little bit statistic for Pakistan. पंजाब में आप देखें, सिंध में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में, हिंदुस्तान में देखें, नॉर्दर्न एरिया में, टोटल फॉर पाकिस्तान इज देयर. तो आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सबसे ज़्यादा वाटर इरोजन है. सिंध में थोड़ा है, बलूचिस्तान में अगेन लेस है, नॉर्दर्न एरिया का डेटा इनकम्प्लीट है, लेस है, लेकिन टोटल इरोडेड सॉइल्स in hectares they are 11,171 also hectares हैं. वाटर इरोजन के लिए, पानी के लिए कुछ वेलोसिटी चाहिए. Needed velocity to move the particle, minimum velocity, so that is needed. A particles of 0.1 mm size needs water velocity of 2.5 centimeter per second for its detachment. Detach करने के लिए अगर कोई 1 मिलीमीटर सॉइल पार्टिकल है, ये जगह पड़ा हुआ है, तो उसको डिटैचमेंट के लिए 2.5 cm per second velocity चाहिए. Then it would get detached, then it can be moved. But for transporting, it needs more than 0.9 cm per second flow velocity. The amount of loss of soil loss due to overland flow erosion varies with the turbulence or velocity of the flow. ज़्यादा कि the turbulence, कि उसमें कितना turbulence है, तेज़ आ रहा है, तेज़ी कितनी है, और flow rate क्या है, वो डिपेंड करेगा कि where it can be deposited, how far it can move. So soil clods
ये थ्री स्टेप प्रोसेस है. Soil clods aggregates are broken into smaller aggregates and individual soil particles. तो पहले तो ये है जी कि वो ब्रेकेज होगा. सॉइल एग्रीगेट सॉइल हमेशा फ्री नहीं होता है, कुछ न कुछ एग्रीगेशन ज़रूरत होती है. वो एग्रीगेट पार्टिकल्स टूटने चाहिए, क्लॉड्स टूटने चाहिए. उसके बाद फिर इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, दैट दे वुड मूव. Detached soil particle is transported. Transported soil material is ultimately deposited at a suitable sites. ये पहले भी मैं कह चुका हूँ. Again we are repeating, and this sentence would be true for all kind of eroded material. 5 types of processes are involved when there is a water erosion. 5 type of process: raindrops, splash erosion, sheet erosion, rill erosion, gully erosion, tunnel erosion. Raindrops splashing, छींटे पड़ना. As I gave you an example, when you are walking through rain, even very slow and steady rain जो है वो उससे भी आपके कपड़े जो है खराब हो जाएंगे क्योंकि splashing अगर थी. Sheet means के slow moving water is there. रेल थोड़ा सा तेज. गली जब बहुत बड़ा एरिया मूव करे. और टनल जो कि एपरेंटली ज़ाहिर ना हो, ज़मीन के अंदर पानी जा रहा हो और एरोजन हो रही हो. सो वी वुड डिस्कस ऑल ऑफ देम सेपरेटली. रेन ड्रॉप्स एंड स्प्लैश. Rain drops or flowing water are the two major erosive or erosional forces causing detachment of particles. The energy of flow water primarily transports detached particle material. Falling raindrops uniformly exert pressure on the soil surface. It acts as a leveling agency. Flowing water creates very small, fine channels called rills and dikes. तो ये आप गिलास में पानी ले ली, कच्ची ज़मीन पे फेंके ज़रा, तो आप देखिए जहाँ फेंकेंगे वहाँ स्प्लैशिंग होगी और बड़ा सा बन जाएगा. Raindrops or flowing water are two major erosive agents causing detachment of particles. The energy of flowing water transports the detached particles. Falling raindrops uniformly applied forces on the soil surface during raining. It acts as a leveling agent. Leveling agents when water is moving, so whatever ditches are coming in its way, gaps are coming in its way, cracks are coming in its way, they would be filled with the soil particles. Flowing water creates very fine channels called rills. शुरू में आप देखें अगर आप पानी को छोड़ें तो बड़ी बारीक सी लाइनें आपको नजर आएंगी. ये बारीक लाइनें जो हैं ये रिल्स कहलाती हैं. 2 or more rills combine to form a dike और फिर वो मेजर बनती हैं. Erosion caused by flowing streams cuts the channels. Whenever कोई भी जो वाटर इरोजन है, अगर वो किसी जगह को एरोड करके खोद के ले जाती है तो वो चैनल्स बनते हैं या गलीज बनती हैं. रेन ड्राइव्स स्ट्राइकिंग द सॉइल सरफेस ग्रेट फोर्स काजेस वेरियस इफेक्ट्स. क्या इफेक्ट्स हैं? इट डिटेचेस डिसलॉजेस द सॉइल पार्टिकल्स. द बीटिंग इफेक्ट्स ब्रेक्स द ग्रैन्युलेशन एग्रीगेशन क्लॉड्स. काफ़ी इम्पैक्ट होता है बीटिंग का. इट्स स्प्लैशिंग इफेक्ट्स काजेस ट्रांसपोर्टेशन. स्प्लैशिंग पानी आप डालते हैं, छींटें पड़ती हैं तो वो छींट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. काजेस कंपैक्शन. इट सील्स सरफेस बाय क्लोजिंग द सॉइल पोर्स. सॉइल पोर्स सील हो जाते हैं और इट मेंटेन्स फ्लो और टर्बिडिटी ऑफ द सॉइल particles. Splashing water dislocates and transports the soil particles.
स्प्लैशिंग वाटर, जब पानी, ज़ाहिर है कि बारिश का पानी आराम से नहीं आता है, छींटों की तरह से आते हैं, ज़ोर से आते हैं, नीचे गिरते हैं। तो आप देखिए कि थोड़ा सा कंपेयर, जस्ट कंपेयर विंटर और समर रेन्स। समर रेन बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग से आती है, चीज़ों को इधर उधर कर देती है, सॉइल को इधर उधर फैला देती है। जो विंटर रेन्स है, जो कि फ्रंटल रेन हम कहते हैं, स्लो एंड स्टडी होती है, सो काफ़ी फ़र्क पड़ते हैं। हैवी रेन मे रिमूव 225 मेगा टन्स per hectare of splashes in soil. Some of the drops may rise to 0.7 meter and may move horizontally up to 1 to 2 meters. ये आप देखिए, दिस इज वन फिगर के 0.7 मीटर तक ऊपर जा सकता है स्प्लैश की वजह से, और 1 से 2 मीटर तक साइडों पे सॉइल फैल सकता है, गिर सकते हैं, पार्टिकल्स उसकी गिर सकते हैं स्प्लैशिंग की वजह से। वो जो मैंने आपसे एग्जांपल की कि एक बंदा अगर वो जा रहा है पानी के किनारे रोड के पास, या पानी है और एक मोटर गुजरती है, तो स्प्लैशिंग से उसके छींटे आप पे पड़ेंगी। या अगर जस्ट टेक अनदर एग्जांपल कि बारिश हो रही है, सड़क पे पानी है, एक कार बड़ी तेज़ी से आपकी कार के करीब जुड़ती है, आपके कार के शीशे और साइड शीशे पे छिड़काव पड़ जाता है, वो उसमें मिट्टी होती है, गंद हो जाता है। सो दिस इज हाउ स्प्लैशिंग रेन ड्रॉप वर्क्स। इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप। Raindrops impact is ineffective on a level soil surface except infiltration and runoff. अगर एक soil level है, बिल्कुल हमवार है, there is no sloping, there is no direction, तो इनफेक्टिव होगा, सिवाय इसके कि रन ऑफ हो सकता है और इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, दैट इज वाटर कैन एंटर इनटू द सॉइल। ब्लोइंग विंड प्रोमोट्स मूवमेंट ऑफ स्प्लैशिंग। इफ विंड इज ब्लोइंग, जिस तरह हमने कहा जी कि 2-3 फैक्टर मिलके भी काम कर सकते हैं। इफ विंड इज ब्लोइंग, तो ब्लोइंग विंड, जो विंड का जो वाटर के इम्पैक्ट है वो तेज़ हो सकते हैं, स्प्लैशिंग तेज़ हो सकता है। आप देखें कि बाज़ औक़ात बारिश हो रही होती है और ये उल्टी तिरछी सीधी शीशों में खिड़कियों से अंदर आ जाती है स्प्लैशिंग की वजह से। हाउएवर, रेन स्प्लैशेस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स ऑन स्लोपिंग। whenever there is a slope, whenever there is a gradient in the soil, then rain splashing is a very effective agent in moving. ये आप, I will give you again an example कि वो splashing तो नहीं है लेकिन वाटर मूवमेंट है, गिलगित से बड़ा तेज़ी से पानी खैबर तक पहुंचता है, अटक तक पहुंचता है और दरियासिंध में शामिल हो जाता है, क्योंकि स्लोप है। Erosive force of raindrops depends upon kinetic energy or momentum. So, kinetic energy, momentum, duration, कितनी देर के लिए बारिश हुई, and wind, wind की speed कितनी है। Momentum increases with increasing size of the raindrops. If the raindrop is small, mass, weight is less, then less effect will be there. लेकिन when rainfall is heavy, drop is heavy, then more effect is there. Kinetic energy increased over. I gave you example that the winter rains are known as फ्रंटल रेन्स, स्लो ड्रिजल्स, पुख्तों के मतलब जलाई हुई, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन समर में जो 10 मिनट 15 मिनट बारिश होती है, एकदम ऊपर से आती है, वो एक तो तेज़ी से आती है और एक उसका रेन ड्रॉप का साइज ज़्यादा होता है। दैट इज़ मोर इफेक्टिव
in removing, in splashing, in detaching, in transporting the soil particles. Larger drops between 50 to 100 mm power have a greater momentum and kinetic energy. An effective erosion threshold is of 25 less than 25 mm per hour is important, causing erosion more than 25. Detachment utilizes almost two-thirds of the energy. जो रेन ड्रॉप की एनर्जी है, टू-थर्ड एनर्जी डिटैचमेंट में लग जाती है और वन-थर्ड देन ट्रांसपोर्ट पे लग जाती है. रन ऑफ इंक्रीजेज विद सीलिंग ऑफ द सॉइल सरफेस. सो रन ऑफ वाटर शुरू में स्लो मूव करेगा, बहेगा. बाद में जब सीलिंग हो जाती है तो वाटर स्पीड मूव्स वेरी फास्टली बिकॉज soil becomes sealed, or sealed soil does not prevent or decreases the velocity. Wind also increases, as we said. Wind जो है, this increases the velocity of the raindrops and kinetic energy. Splashing effect of soil particles 2 mm diameter, but selectivity removes finer particles. Splash erosion depends on the type of rainfall. Soil moisture, total rainfall amount, and season of rain. Erosion due to splashing, rills together erode. This is one estimation, 958 hectares in Punjab, 1010 in the KP, 1805 in Balochistan, or 206 in the Nazir. This makes a total of 3,978 per acre splashes in Pakistan. Thank you very much.